इंट्रोवर्ट्स लाइक जेम्स बॉन्ड, ब्रूस वेन या रायन रेनॉल्ड्स, ये सभी एक डार्क कॉन्फिडेंस एंड एक मिस्टीरियस करिश्मा होल्ड करते हैं जो कि सभी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। द वे दे कैरी देमसेल्व्स और द वे दे कम्युनिकेट, उनके हर एक एक्शन में यू कैन फील दैट मिस्ट्री एंड दैट कॉन्फिडेंस एट द सेम टाइम। Mr. Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. My name is Bond. James Bond. इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप शाय हो या आप लोगों से डरते हो। इंट्रोवर्टिज्म को आज की एज में गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। स्कूल्स में हमें सिखाया जाता है टू बी एक्सट्रोवर्ट, तभी आप लाइफ में या कैरियर में अच्छा कर पाओगे। Just by being introvert in certain areas, especially when it comes to business, that holds me back. Believe me, it's not the case. Introvert होने का सिंपल सा मतलब होता है you feel more energetic and rejuvenated being alone. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी से डरते हो। So just start carrying yourself with pride and honor. इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि how you can also be that introvert जो dark confidence and एक mysterious charisma carry करता है। So just stay with me till the end of the video क्योंकि हर एक point बहुत important है। Part 1 Mindset Shift. The very first part is about mindset. आपका जो परसेप्शन है इंट्रोवर्ट्स को लेकर या खुद को लेकर वो आपको रीराइट करना होगा। एंड जैसा कि मैंने बताया था, इंट्रोवर्ट होने का सिर्फ यही मतलब होता है यू फील गुड बीइंग अलोन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप डरते हो। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्फिडेंस isn't about needing others to like you. Rather, being okay if they don't. So just stop overthinking about everything. Channelize your energy wisely and you will be at the top in no time. Which brings us to the second part of our video, which is about social skills. I know, you all just love being alone. But बात कैसे करते हैं वो तो सीखना पड़ेगा ना? Because being charismatic at least expects you to have some social skills. So just go and talk to people. Give them genuine comments without expecting anything in return. Hi guys, I just saw you. You guys look very stunning. I just wanted to come and compliment you. What's your name? Shreya. Hi. Abhishek. What's your name? Akshita. Hi. Abhishek. And yours? Dhanashree. Tanushree. Hi. Wanting to level up my cold approach skill. So I'm not even lying, bro. I'd literally just go on like a half an hour walk every day and literally just go approach. But I'm kind of glad that I did. Not that it was really high ROI, but I learned quite a lot. एक कॉन्वर्सेशन में बात करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनना होता है। लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करो, ज़्यादा सवाल पूछो, खुद को सबके सामने ओपन मत किया करो। लेट अदर्स टॉक मोर। We often take listening for granted as something easy and natural. But in fact, at least in my experience, real listening, genuine listening, is something that needs to be learned and practiced every day. In short, listening may be the cheapest concession we can make in a negotiation. It costs us nothing, and it brings huge benefits. Listening may be the golden key that opens the door to human relationship. Part 3 is about guarding your attention. आपका attention is one of the most valuable assets you own. आपका attention if used correctly आपको कुछ भी दिला सकता है and if used incorrectly आपसे सब कुछ छीन भी सकता है। So just guard it. अगर आप बार बार भटकते रहते हो then just plan your whole day one night before. अपने attention को useless जगहों पर लगने ही मत दो। Just run away from useless and unproductive interactions जिससे आपको कोई value provide ना हो रही हो। Our attention spans are getting shorter. We're distracted a lot. More than we realize, really. Our thoughts and energy are constantly being pulled by this ever-changing, fast-paced environment we call home. Which brings us to the last part of the video, which is body language. सारे पावरफुल लोग किसी भी रूम में खुद को ऐसे कैरी करते हैं as if they own the place, like they are the leader of that place. उनका calm and relaxed composure with an attitude is what make others to get a great first impression. आपको भी यही करना है. Carry yourself with a charisma. आजकल लोग राउंडेड बैक एंड अ फोन इन देयर हैंड ऐसे चलते हैं एंड फिर बोलते हैं कि nobody values them. How to stand properly. And you know what they tell you? Chin up, chest out, shoulders back. They make you stand like that. There's no coincidence to that, is there? Not at all. Not at all. Well, it's a you could say it's a dominant stance. Just change it. So अगर sum total में कहें तो just change your perception towards introverts. Have some really good social skills. Guard your attention. Have your priorities set ताकि आप भटको ना. Wherever you go, carry yourself with an attitude and a value, but never be arrogant about that. So that's all for this video. Thanks for watching.